Good morning, my dear students. This is Sunita Menon. I can see Rahul. Good morning. Pranita. Good morning. I am Sunita Menon because all the students might not know me, even though my students know, MA English students. So today we are going to have a lecture on interview skills. And I want the session to be interactive. I hope that you will respond immediately. In the chat box, you can put your comments, which I can see. So that I will know what, because, unfortunately this year, since it is online, we cannot have a face-to-face session. So let's start. Sir, share the screen. Tanmay sir, have you shared? Yes मैम, मैंने शेयर कर दिया है. So I can see both. Actually, it has become very small for me. What do I do? Make it a bit bigger? हाँ Yes, नहीं, अभी आप yeah, I start हो can गया see. मैम. Yeah, I've made it big. Now I can see it. Okay. Yes, Diksha, good morning. I can see many faces today. All right. I hope you are slowly, you are entering, I think, right? The classroom. Yes, good morning. Yes, Jyoti, I thought I'll give you 2 minutes to join and then we will start. Kiran, yes. Yes, good morning, Mahesh. Good morning, Vaishnavi. I can see the comments. All right, so let's start with it. Or if we give you 2 minutes, because since it is the first lecture, I will give you 2 minutes, 2 to 5 minutes to join so that all of you can be here. Tanmay sir, I'm not able to see the comments here on my mobile. Why is it so? Live chat, I'm not able to see. Tanmay sir, using the link that दिख you have जाएगा given. मैम. आपने YouTube का वीडियो ऑन किया है? Yeah, that is what I have done it. हाँ, तो वहां पे देखो लाइव चैट करके एक ऑप्शन है. Yeah, but उसमें नहीं, comments are not coming. एक सेकंड दिखाते हो मोबाइल? Yeah. Can you see? आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा मैम. Oh, I see. So what do I do for that? Students से मैं enter नहीं कर सकती हूँ. Should I enter through mine only? आपका गूगल के अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हो. Okay, I'm trying that. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो मैम. स्क्रीन पे भी है नाम. Yeah, that is better. Anyway, I'm मैं able to see. ऑपरेट कर रहा हूँ. Fine. I better start. Otherwise, the time will be wasting a lot of time. I can see it on the screen then. Thank you, sir. I'll start. Okay, my dear students, I wanted to have a totally interactive session as usual, like we have in the classroom. But since that is not possible, let us go for this online mode. And I hope all my students will be active here. Again, present, sir, I'm getting. I hope you can see me and can hear me. Am I audible? Just answer that so that I'll be comfortable. All of you can hear me? Or is it too much? The voice is too much? Sanjana, yes. Present, sir. I think it is Tanmay, sir. You are saying hi to him, I think, right? Shraddha, fine. Am I audible to all of you? Yes, Ashwini, can you hear me? Okay, Pooja, thank you. So let's go ahead. Yes. Thank you, Vaishnavi. I like my students who respond immediately. My students are good. Yes, Dhanashree. All right, some of my students are there. I can see that. All right. So interview skills, let us go ahead with interview skills.
What is before starting interview skills? Let me ask you a question. Yes, good morning, guys. Okay, let's get started. Okay. So, what do you mean by communication? Let's start with a broader topic. Okay, Hindi में बोलना जरूरी है तो you put that. My Hindi is horrible. You can laugh at my Hindi, but I can start in Hindi if you are finding it very difficult. English में बोलो या हिंदी में? Marathi I cannot speak, out of the question. So the option is yours. You can decide. Tell me, guys. Yes. Any answer? Whether I should be speaking in Hindi or English? I'm comfortable with English, not so comfortable with Hindi. Broken Hindi I can use. Okay, I will start because it's taking time to get Hindi. Sunil, okay. A little bit, तो मैं थोड़ा सा mix कर लेती हूँ. A bit of Hindi. Please speak English. I think those students who understand English might as well understand Rutuja English. My God, now you're putting me in a fix. All right, we'll have both the language, a little bit of Hindi as well as a little bit of English, so that all of you can understand. Okay. So what do you mean by communication skills? What are the basic elements that you have in communication skills? Can you tell me which are they? Communication skills में what all things come in communication skills? Yes. Sir, you have enlarged my pic and then the interview skill has become small. Now it is okay, sir. It is okay, sir. Now I can see at least properly. All right. Yes. Hi. Yes, communication skills. Let's go back to English. Yes, I'm getting the responses still. All right. मैं mix कर लेती हूँ both the languages, guys. So, what do you mean by communication? How does communication take place? What do you mean by the term communication? Any answer? Presence of mind is communication. All right. You have already started discussing the elements, I feel, right? Presence of mind. Anything else, Sanket? Confidence. No, communication. What do you mean by the term? I have not started with the topic. Body language, confidence. Like, wait. Okay. We are talking about communication skills first. Communication skills is all about language. Fine. Anything else? Garima, thank you. Anything else? What is communication? Interact. Fantastic. I'm getting the answer. Bhushan, thank you. Interacting with each other. Oh, fabulous, Kiran. Sharing of thoughts, views, ideas, emotions. Conversation. Yes, Nachiket. Conversation between two people. That is communication. At least two people are required. So the second step also you have told me. Exchange of thoughts. Fantastic. Exchange of thoughts. Mixed language. Okay, mixed language. थोड़ा सा हिंदी. My Hindi is horrible. तो आप लोग हंसने वाले हैं मेरे हिंदी सुन के. Fine. Fluency. Yes, the next point is fluency. Communication means the conversation between two people. Fine, I can see that as well. Then, which are the things involved in that? Which are the skills, basic skills? Is first, it starts with listening, speaking, reading, writing. And then when the conversation takes place, understanding and responding. मतलब सुनना, listening, speaking, तो translation का जरूरत नहीं है. You must have understood. And communication, तो आप लोग so many lectures you must have attended. MSc and MA students means you must have attended so many lectures. So I'm pretty sure आप लोग comfortable हो से. And since there is no ice breaking session with the interactive session, में ice breaking session easily होता है, making you speak and all that. At least आप लोग chat box में डालो so that I will know that my students are not sleeping. I never allow my students to sleep, Pratiksha, listening, speaking, reading. Very good. So in that, again, there are subdivisions. When you talk about communicative skills, mein, aap log sikha hoga, which are the divisions that you have generally. You will say ki verbal communication and non-verbal communication, or formal and informal. But verbal, non-verbal, since it is part of mere iska part hai karke I'm not going to touch it. But let us see about this observation. Fine, Hina, fine. So formal and informal mein interview skills comes. This is an extremely formal situation. Interview skill, formal situation. Because it is a serious atmosphere. People are observing you. They are testing your skills. They are asking you questions. So isliye interview matlab it is a formal situation. ठीक है?
All right, now let us get really into the topic and see. The next slide. Let's see. Sir, I'm not able हाँ to मैम, slide. वो जो पीपीटी वाला विंडो है ना, उसको बड़ा कर दूं? नहीं, आपको मेन सॉफ्टवेयर ही ऑपरेट करना है। पावर पॉइंट का जो मेन सॉफ्टवेयर है ना, हाँ, हाउ डू आई डू वहां दैट? पे आपको नेक्स्ट स्लाइड शिफ्ट करना है। So yes, I tried that. No, you're not here. Not here. Where do I do that? स्टार्ट एड्रेस बार पे पावर पॉइंट रहेगा, आप देखो। My God, slideshow me. Where does it come? I have no idea about this. पावर पॉइंट आपने ओपन किया है ना? Yeah, already. हाँ, Yeah. हाँ, तो पावर पॉइंट पे ही चले जाओ और वहां पे नेक्स्ट वाला स्लाइड आप क्लिक करो। अभी फर्स्ट वाला स्लाइड सिलेक्ट है, अभी सेकंड वाला स्लाइड सिलेक्ट करो। नहीं हो रहा है ना, the way you are saying, I don't know how to go to PPT. आपने Sir, स्क्रीन शेयर किया है ना? हाँ, stop screen sharing and then go back. हाँ हाँ, चलेगा। I stopped screen sharing. Fine. And how do I ओके, do that? अभी फिर से Sir, पावर पॉइंट ओपन करके रखो। पावर पॉइंट ओपन करके रखो, प्रेजेंटेड मोड मत रखो। प्रेजेंटेड मोड मत रखो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर ओपन करके रखो। ओके, सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है मैंने। ओके, शैल आई शेयर देन? नाउ शेयर इट अगेन? हाँ हाँ हाँ, अभी विंडो शेयर करो सिर्फ। ठीक है। फाइन सर। ओके, इज हाँ इट तो सीन? हाँ, अभी सेकंड स्लाइड आप सिलेक्ट करो। Fine. But the only yes, problem yes. is I cannot see the comments is the only problem, sir. I cannot see the comments of the Yes, students. yes, yes, ma'am. That becomes a problem for me because mine Okay. is interactive session. Yeah. आपको कमेंट देखने हैं तो आप विंडोज और टैब का बटन प्रेस कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको कमेंट्स भी दिख जाएंगे। No, I'm not able to see that. Still. आपको सिलेक्ट करना होगा ये अपना प्रेजेंटेशन वाला विंडो, लाइव सेशन वाला विंडो। Okay. Fine, sir. But थोड़ा देखना मुश्किल है, ठीक है। Fine. I think I'll be able to change it then. Again, the same thing happens, sir. I'll have to keep going back to it, I think. Right, sir? Sir, a lot of confusion. ओके मैम, आपको YouTube के ऊपर कमेंट्स दिखना स्टार्ट हो गया? Yes? YouTube के ऊपर कमेंट दिखना स्टार्ट हो गया? No. No, I cannot see. But changing this becomes difficult when I put it this way. The slides are becoming difficult, sir. When I do it Okay. this way. Private chat दिख रहे हैं, but chat box में students are not commenting. Probably I cannot see. But ये change करना नहीं होगा PPT फिर. हाँ, आपको वो 1 by 1 चेंज करना होगा। Going back again. I see. All right, students, I'm so sorry for this interruption and disturbing you like this. But let's go on. Can you hear me now, even now? Because I cannot see in the chat box anything. Can you hear me? Friends, all of you can hear? Yes. Students, write something so that I would know that you are listening. Okay. Present, ma'am. Fine, fine, fine. I can see that. Okay. All right, all right, all right. Good morning.
Okay, so what comes to your mind when you hear the word interview? आप लोग ये interview, thank you Hina. When you hear the word interview, क्या आता है आप लोगों का मन में? What comes to your mind the moment you hear this word interview? The butterflies आते हैं क्या पेट में? Butterflies start flying in your stomach डर से? कि what comes to your mind? Yeah, you remember that panel of the interviewers sitting there interviewing you. Is that what interviewers and interview is? This is the picture that you have in your mind. What picture comes to your mind? Tension. Rishikesh, you said it. You said it. तो टेंशन पहली शब्द जो है क्वेश्चंस यस ये सब है these are the things that come to your mind. Lots of stress. Garima, you are right, absolutely right, absolutely. श्रद्धा, नर्वसनेस. सो देखो पूरा इसमें एक ही चीज मुझे समझ में आया कि टेंशन, स्ट्रेस, राइट, क्वेश्चंस, फेसिंग द सिचुएशन. सो दिस इज व्हाट फियर. शुभम, वेरी गुड, फियर. So these are the things which come to your mind the moment you hear about interview. जो शब्द है interview, पढ़ाई के बाद जो you have to face, the situation that we have to face, interview. So कैसे, how will we equip ourselves for the interview? How will we get, हम खुद को कैसे, फॉर्मल ड्रेस कोड, एलिमेंट्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे माधुरी, we'll discuss the elements later, but let us talk about interview skill generally and we'll get to the topic. Okay, so the tension, stress and tension, these are the things, मतलब जो पहले मन में आता है, स्ट्रेस है, टेंशन, क्वेश्चंस, हाउ टू फेस, कैसे क्रैक करे इंटरव्यू को, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू. This comes presenting your knowledge without fear. Solutions भी देना शुरू कर दिया आप लोग. Pratiksha, good. Okay, so let's see the next slide. I think I'll have the same confusion going back to the next slide. Sir, I think I'll have to disturb you again and again because... Sir, again, how do I do it with every slide? I'm getting confused. वैसे ही आपको शेयर करना पड़ेगा मैम. Go to your PPT presentation, select the third slide and then share screen. Yeah, I'm doing that. I'm doing exactly that. Every time I'll have to do this, I think, right? Okay. No, probably, because you can just go to your PowerPoint and you can select the next slide. Don't stop sharing the screen. Without stopping also I can do that. Fine. Yeah. Let me see. And this is the first time I'm facing this, I think, right? All right. Fine. Students, I hope you can see this now. The 4 P's of a good interview. This is what we are going to discuss. Which are the 4 P's? Some students have already started giving me some of the comments. I could see earlier comments. Students have already started talking about the elements, like, which are the things required to prepare for an interview. The first one, goosebumps. Okay, you get goosebumps. But I think when you're thrilled, you're scared, goosebumps you get. Yeah, goosebumps you get on many an occasion. Anyway, fluently speak any language, elements, right? Guys, folks, let's go to this first. Preparation. How do I prepare for an interview? कैसे prepare करेंगे interview को? It is the most important of the 4 P's. 4 P's में सबसे important है preparation. So what do you do for that? You have to know about the kind of job that you are doing and the company, institute जिसके लिए आप लोग apply कर रहे हो. You should know the basics very well, or in short, you have to do your homework very well. So try to know more about the institute, company where you're going to work. Try to match your objectives and strengths to those required by the company so that you are better prepared to face the interview. You should be familiar. You should know your strengths and your weaknesses. Because first of all, you have to know yourself for this. Isn't it kind of a proper preparation? It's a life preparation, because your entire life, you'll be after this career, whichever you are going to choose, right? So how do you present myself? Because I want to work in a particular preparation and practice. Yes, I'm getting the answer, Hina. Good. So I have to prepare very well because I want this job. This is the career I have chosen.
When I took MSc and when I took MA, this is what I had in my mind. So how do I prepare for that interview? I have to know, for example, I'm applying at HPT. So I have to know something about HPT. Probably see, they even ask you some silly questions like the entry and exit, even, from where you enter, which are the gates. These questions also I heard they have started asking. That means how good is your observation. आप लोग observe करते हो कि नहीं, कितना अच्छा है observation. Then the elements, the rest of the elements come. Okay, so you have to know about the institute. नहीं तो company है तो उनका product क्या है, what are they selling, what is their strength. So you have to know that. तभी आप लोग अच्छा answers दे पाओगे. All right. So this is the first one, practice. Yes, Kasturi. Second is practice. Generally, they say, practice, practice, practice. This is what they say generally. Sometimes, yes, Asma, sometimes even after preparing well, guys, let me read English slowly so that you catch up, even though I'm not saying it in Hindi. Well, you do not give the interview well. You're prepared. You have made all the preparations, but then still you cannot crack it. Why? This may be due to lack of practice because you have not practiced it. And the question is, interviews can make people nervous, which all my students, many of my students बताया कि nervous होता है, tension है, all these things आप लोग मुझे बताया, right, Rida? Yes. So what do you do for that? It is quite normal to be a bit nervous. थोड़ा सा नर्वस होना अच्छा है बिकॉज यू विल प्रिपेयर वेल. थोड़ा सा नर्वस है, राइट भीमराव. सो थोड़ा सा नर्वस है तो हम लोग इंटरव्यू देने के लिए और प्रिपेयर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, राइट. Try to practice before the interview. So how do we do this? This will take you to your childhood days, बचपन में आप लोग को लेके जाएंगे. How do we used to teach children? छोटे थे आप लोग, पढ़ाई कैसे करते थे आप लोग? You will stand sometimes before the mirror. You will become the teacher. You will enact, you will get into the role. एक teacher का role में जाके you will start teaching. Yes, Bhimrao. So you will start teaching yourself. मतलब teacher बन के फिर सिखाओगे, right? कभी कभी you will have the stick in your hand and you will teach. देखो, this is also a good method. जैसे कि mirror के सामने you sit and then you start practicing. Like, as if you are, you will see how you are talking, whether your expression, does it show confidence, everything. This is one method. और या एक फ्रेंड का सहारा ले लो, या योर पेरेंट्स को पकड़ो, किसी को भी, यू कैन कैच होल्ड ऑफ समवन क्लोज टू यू एंड देन बताओ मुझे, आस्क दिस क्वेश्चंस और मैं आंसर दूंगी. तो लेट मी सी वेदर आई कैन आंसर वेल. सो सी, यू कैन हैव रियली, oh Vamsi, hi, okay. Oh, so Vamsi has started responding. Good. All right. So you can take a friend's help. You may also use common interview questions, prepare some answers, and then practice them. So these are the methods. The first two P's, I think, clear enough, logon ko? Preparation, practice. I'll ask you afterwards. Okay. So which are the first two? Preparation and practice. Fine. I'm just repeating it so that my students get to know it well. We move to the next slide and see whether, yes. Next one, I think you are able to see it. Punctuality and presentation. These are the other two P's that are important in order to give a good interview. So 4 P's से एक अच्छा interview देने के लिए. So punctuality. इंटरव्यू का टाइम मालूम है 11 o'clock है, बट आप लोग आओगे जस्ट प्रॉबली 11 o'clock का 1 मिनट पहले आओगे, हॉल स्वेटिंग, नहीं तो भी नर्वसनेस है और टेंशन है, ऊपर से देर हो गए, यू आर स्वेटिंग ऑल द वे एंड देन यू रीच देयर, यू आर वरीड, राइट? So being punctual is important. Yes, Divya, correct. This actually indicates a lot about the preparation and practice. Neha, yes, I'm getting the answers of the previous question. Thank you. So this actually indicates a lot about the personality of the person as well as their professionalism. So you have to show that I am a professional. So by being punctual, you're making it absolutely clear that I am extremely punctual and I am very serious about this career, right? This job. Then you should respect the time of the person's interview. They also have got busy schedules. The person who is interviewing you, they have busy schedules. So respect that, right?
उसके लिए रिस्पेक्ट दे दो. जो इंटरव्यूअर है उसके लिए भी, इंटरव्यू करते हैं उसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट, इंटरव्यूई उसको रिस्पेक्ट दे दो. एंड नेवर फॉरगेट टू बी पंक्चुअल व्हेन यू हैड बीन कॉल्ड फॉर अ सर्टेन इंटरव्यू. इफ देयर इज एन अर्जेंट रीजन व्हाई यू कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम, तब क्या करोगे? टाइम पर पहुंचा नहीं, बहुत कुछ कोशिश किया, बट समटाइम्स यू नो हमारे हाथ में नहीं रहता. यस माधुरी, समटाइम्स इट इज नॉट इन आवर हैंड्स. यू नो ऐसा कुछ हो गया कि पहुंचना नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कि समथिंग हैपेंड ऑन द वे. Because I hear my students giving me all those things, excuses generally, because you know some students have a tendency, like you know, to get up late or not early, all those whatever issues you have. But इंटरव्यूज के लिए तो आप लोग वो नहीं करोगे, सीरियस है, बट फिर भी देर हो गए तो बी ऑनेस्ट. टेल देम ऑनेस्टली, सो दिस इट एंड आई एम सॉरी, बट आई ट्राइड, आई कुडंट रीच. So be honest. That is one of the things that you can do. You should let the interviewer know about it. Make sure to give them proper reasons. Make sure that the interviewer, yes, Sneha, gets, oh, Sneha's also reached, fine, hi, and gets the details he or she asked for on time. Okay, so you have to prepare the answer well. Why am I late? I have to give a logical, reasonable answer. Okay, so that is the third one. Now comes the fourth one, presentation. A lot matters on the way you present yourself during the interview, right? Presentation is the most important thing. Some of you already mentioned that, you know, when I was asking about communication skills, at that time also you were giving me these answers, actually speaking, with proper gesture. Yes, Bhushan. So presentation, gesture, body language, we are coming to that slowly, Bhushan. We are coming to that. Thank you for that comment. Then the way you present yourself during the interview, this includes the way you dress. Your attire is extremely important. What are the sort of clothes that you are going to wear? The way you speak, intonation, accent, all those things come there. Your interest in the position, show some interest. It is not like I'm not interested in the position, I'm just giving it. Who's going to select you then? You show the interest, the appropriate interest in that, and then the skills that you can bring to the company, and what will be your contribution. How will you make the working of the company much better, make it more profitable? What is it you're going to give to the company, to the institute? Your presentation should be able to establish you as a professional. I told you, we are reiterating, we are saying it again. हम लोग, sorry, I forget to speak in Hindi in between. तो हम लोग को ये याद करना है कि professional है करके दिखाना जरूरी है. Yes, formal. Yes, Neha, formal. So it is formally attired, yes. And then, so it is very important to establish you as a professional and the most suitable. I have to prove, like, I am very suitable. There are so many people, itne sare log de rahe, to it expresses one's sincerity towards the work. Pratiksha, good, Pratiksha, good. You're responding very well. Okay, so you have to show that, you know, you're a professional and you are suitable. Me ye post ke liye suitable hu. I have to show that I'm suitable for this. Then next sentence is a positive approach is important. You will see everywhere. Interview matlab you will see positive approach. You have to be positive. Because and ये positive approach का जो sentiment है वो the other person तक जो interview लेता है वो person तक पहुंचना चाहिए. It is important. And last, see, मैंने लाल color में दिखाया, focus on what you can do rather than what you cannot. I cannot do this, I cannot do that. It is total, utter negativity. So what you should be doing, ऐसा चीज stress करो which you can do. I can. आजकल वो है ना, I didn't talk to you about that. I can. Yes, confidence. Exactly. Sneha, that is exactly the thing. I can. A positive approach, attitude that I can do this. Fine. So now let me put a question and then go to the next slide. So which are the 4 P's which are crucial, important for a good interview? So 4 P's कौन सा है जो interview के लिए important है? आप लोग मुझे बताओ. Which are the 4 P's important for an interview? Tell me. Yes. I'm waiting for your answer. I'll continue, but I'm expecting your answers. आप लोग answers expect कर रही हो? Are you following me, guys? समझ में आ रहे हैं कि आप लोगों को तो या English बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं? Is it difficult? Kasuri. Yes, following. Good. So 4 P's लिखो. Which are the 4 P's we discussed?
Oh, yes, be bravo. Yes. Sneha, dress code is not what I asked you. I asked you the piece, 4 piece preparation. Yes, very good, very good. Preparation, presentation. Sneha, yes. Pranita, okay. Pranita has given me practice, presentation, punctuality. 3. One is missing. What is that? Preparation, practice. Snehal, practice twice. ये अच्छा गिमिक है. And punctuality. प्रैक्टिस 2 बार हुआ ना, कुछ तो भी मिसिंग है उसमें. क्या है? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस. We are comfortable with your English, ma'am. Sneha, you're from English classroom, but I'm asking about others, whether they are comfortable. Students of English comfortable hai? Yes, preparation, practice, punctuality, presentation. Divya, excellent. Good. You have given me all the 4. Okay. Siley, you are there. Got up. All right. Preparation, practice, punctuality, presentation. Good. Okay. Now we move on. Let's see how to tackle the interview. What is the first question? Tell me about yourself. Oh, before that, probably you might ask me this question. When you, how do you enter? How do you enter? Which question do you ask? Last time when I was dealing with the students said that is the first thing, like you're entering. And that's the most important thing. Let me tell you, the way you carry yourself, like, from outside, entering through the door inside, they will observe you. Because as I have heard, yes, Ashwini, good. Preparation, practice, punctuality, presentation. Good, Ashwini. Good. So they see, they observe you. How do you walk yourself? Like, how do you carry yourself? Kis dhang se? Yes, Madhuri. Kis dhang se chalte ho? Straight, back straight. See, actually speaking, आप लोग बाहर बैठते time interview के पहले when you are sitting outside, there itself you be a little careful, because industry में, in fact, what I have seen is they select the person बाहर बैठ के अंदर आने तक selection हो गया. मतलब they will observe you how you sit, how you carry yourself. तो उधर भी थोड़ा seriously बैठो, and back should be straight. वो बहुत important है. Straight back shows character and you are serious about it. Good body language. Okay. After that, when you come in, you can even ask second question, may I? मतलब खड़े रहो, but पूछने बोलने के बाद ही आप लोग बैठो and say thank you when you sit down. Then starts greeting. So how do you greet yourself? Good morning. 12 o'clock का पहले है तो आफ्टरनून, उसके बाद है तो गुड आफ्टरनून, और 4:30 के बाद है तो टिल 12 o'clock at night. आप लोग क्या बोलेंगे? रात तक का. It is the same, because आजकल मोबाइल में सब होता है, इंटरव्यूज जूम में, you know that. So कभी कभी टाइम अलग अलग रहने का chances are there. So you will say good evening, then shake hands or namaste. Second, permission. Yes, permission. Good. So shake hands or say namaste. After Corona, आप लोग को मालूम है, namaste has become a world language of greeting, gesture of greeting. So you either shake your hands or say namaste, whichever you are comfortable with. Otherwise, and job का nature के ऊपर भी थोड़ा सा है. Good morning, good afternoon, good evening. Madhuri, thank you. You have given me all the. What should be it after 12 o'clock? क्या होना चाहिए? अभी डिस्कस किया हम लोग. Good afternoon. नचिकेत, it is good afternoon. 12 o'clock के बाद है तो गुड आफ्टरनून. ओके, मैं आप लोगों को छोड़ दिया. मराठी स्टूडेंट्स भी होगा इसमें, मराठी सब्जेक्ट का. देखो, आप लोग मराठी में है तो मराठी में बोल सकते हो, हिंदी में है तो हिंदी का. मेरे इतना अच्छा नहीं है करके कमांड ओवर दीज लैंग्वेजेस. आई कैन नॉट गिव यू all these words, but I think namaste is a universal language, easiest language. Namaste. Fine. Okay. Then you should appear. What should be your demeanor like? Expression क्या होना चाहिए? Mood क्या होना चाहिए? It should be very pleasant. Don't laugh, but smile. A tinge of a smile, pleasant face. So it should be pleasant. Then show confidence. And then keep eye contact. Eye contact extremely important है. आप लोग presentation skills बोलो, कोई भी skills बोलो, everybody will tell you about one thing: eye contact. Interview, yes, Akash. So interview chalte time you are sitting like this. Simply not done, right? You will not be selected. So at least eye contact hona chahiye. Plus, especially, sir, don't keep changing. I cannot see the slide now. Yeah. Thank you. So shake. The next one is like you have a slight smile on your face. You are looking very pleasant. You look very pleasant. So you show that you have confidence and you are comfortable. So eye contact is the most important thing here. Do not, I have put it in red letters. Do not say hi, hey.
जी आप लोग फ्रेंड्स को मिल रहे हो कि हाय और हे बोलने के लिए? यस ही ना, पोलाइटनेस इज रिक्वायर्ड, पोलाइटनेस इज रिक्वायर्ड, दिस इज द मोस्ट फॉर्मल ऑफ सिचुएशन। सभी सिचुएशंस में सबसे फॉर्मल सिचुएशन है इंटरव्यू, सो पोलाइटनेस मस्ट है। सो यू कैन नॉट से लाइक आजकल स्टूडेंट्स को बहुत टेंडेंसी है, हे आई गेट मैसेजेस सो मेनी टाइम्स, मेरे एमए स्टूडेंट्स अभी का बैच में बहुत स्टूडेंट्स है जो हे मैम, हाय मैम, राइट, हाय स्टिल ओके, हे becomes too informal, too casual. So you should not say those, use those words, hey, hi. Instead, you greet and then use it. That is the right way. Okay. Next part is, see, they already have your CV or your biodata, your all the information. आपके बारे में पूरा information उनके पास है. But respect, yes. Mangesh, yes. You should start with your full name. So they will ask you this, they ask you this question, introduce yourself. This is the first question, or the trick question. What is that question? Tell me about yourself. Talk. अच्छा हिंदी में बोलूं? ओ सॉरी जयश्री, सॉरी, बीच में भूल जाती हूँ हिंदी में बोलने के लिए। आई विल डेफिनेटली डू दैट, ओके, बट मेरा हिंदी बहुत ही खराब है। ऑलराइट, बट स्टिल नो ग्रामर, ग्रामर नहीं उसमें। एनीवे, सो what about hello ma'am? No. Hello भी casual है ना, greet ही करो। हाँ, good question you have asked. Greet ही करो, good morning बोलो, good afternoon बोलो, good evening बोलो। हाँ, okay, that is the right way of greeting. Fine, I think I have, मुझे लगता है कि मैंने आंसर किया आपका क्वेश्चन को। All right, then introduce करो पहले। They will say कि introduce yourself. ये तो first question है ना, tell about yourself, talk about yourself, introduce yourself. Yes, true answers दे दो, no to lie. Fine, स्नेहा. So how do you talk? मतलब मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करूं? It starts with it. इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स जनरली है ना, माई सेल्फ से शुरू कर देते हैं। माई सेल्फ सुनीता मेनन, जैसा कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हूँ, मैं खुद सुनीता मेनन। थोड़ा हम्बल रहो, डोंट से माई सेल्फ। यू स्टार्ट विथ सेइंग आई एम, माई नेम इज ऑल्सो ओके, बट आई एम बोलते टाइम इट साउंड्स गुड। आई एम कॉन्फिडेंस भी है, बट साउंड्स वेरी गुड। आई एम सुनीता मेनन। मैं मेरे नाम बोल रही हूँ, आप लोगों का नहीं। आई एम सुनीता मेनन, बट नॉट माई सेल्फ, माइन, मिस, मिस्टर, वो सब जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेट नाम बताओ, सुनीता। आई एम सुनीता मेनन, आई एम नेहा, वट एवर, you know, I can't see all the names, otherwise I would have given you the list of names. Then after that, thank the interviewer. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. ऐसा बोलते हुए इंटरव्यू करते हुए पर्सन को पॉकेट में ले लो। So create that good mood, like, you know. So say thank you, the proper appropriate word. उसके बाद here when they say this question, you know, मतलब introduce करो बोलते time, you are getting a fabulous chance. मतलब see, otherwise उनके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है आप लोग का आंसर, बट when they say introduce, उनके पास सभी पेपर्स है, आपका सभी पेपर्स, ऑल योर पेपर्स आर विद देम, बट यू आर गेटिंग एन, उसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से उधर बैठ के पूरा पढ़ने वाला है, बट यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, अपना बेस्ट फुट आगे रखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ये क्वेश्चन में। कौन सा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो अच्छा चीज जो खुद के बारे में, द बेस्ट ऑफ थिंग्स जो है वही बताओ पहले, और ये चांस फिर से नहीं मिलने वाला, बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, उसका ही जवाब देना पड़े, आंसर, सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा आप लोगों को। सो see, the chance to prove why you are qualified for the post, talk about your work experience, then if you are a fresher, achievement। देखो, बट अभी भी एमएससी के बाद या एमए के बाद तुरंत आप लोग जाओगे तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो क्या बोलोगे, बिकॉज एक्सपीरियंस तो नहीं है। Then you have to talk about your academic qualification के बारे में बोलो। आप लोग ने कुछ प्रोजेक्ट किया है कॉलेज में, जैसे अपना फंक्शनल इंग्लिश स्टूडेंट्स है, मैं इंग्लिश का ही बता रही हूँ बिकॉज आई टीच इंग्लिश, ओके। आप लोग आपका खुद का फील्ड देखो और बताओ। तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया, आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, मैंने इंटरव्यू लिया है लोगों का, जो भी है अचीवमेंट वो हाईलाइट करो, और कुछ किया है क्या ऐसा आउटस्टैंडिंग कॉलेज में, उसके बारे में बोलो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस बताने के लिए, फ्रेशर है तो। How long should be the Nachiket? See, listen. I am explaining. ये 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, but I am explaining each and every. देखो, good morning, and उसके बाद I am so and so, shaking hands, and I am so and so. कितना seconds में खत्म हो जाएगा ये, seconds में,
ओके 1 मिनट पकड़ो, बिकॉज इतना देर नहीं लगता इतना सब बोलने के लिए. आई एम एक्सप्लेन नचिकेत, आई एम एक्सप्लेनिंग इट. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ करके आप लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा देर, सेकेंड्स में हो जाएगा 3-4 सेंटेंस. कितना देर लगता है, फटाफट हो जाता है वो. ओके, बट ज्यादा लंबा मत करो. प्रॉब्ली नचिकेत वाज आस्किंग मी कि ज्यादा लंबा नहीं करने का, खुद के बारे में बोलते रहोगे क्या, दैट यू कैन नॉट डू. ओके, बट मेन पॉइंट्स आप लोग बताओ जो आप लोग लगता है कि मैं हाईलाइट करना चाहिए. दोस पॉइंट्स यू talk about. Okay, so use some positive. So if you are a fresher, of course, I have read that. And then list of accomplishments, additional courses जो किया है, special skill. Fresher है तो ये सब करना पड़ेगा. Use some positive words, adjectives to describe yourself. Like थोड़ा थोड़ा वर्ड्स है जो यूज कर सकते हैं. क्रिएटिव है, डिटर्मिन्ड है. बातचीत में ये आना चाहिए. व्हेन यू आर टॉकिंग, दीज वर्ड्स आना चाहिए किधर ना किधर. मतलब मैं ओपन टू न्यू आइडियाज है. देखो मैं एक्सपीरियंस नहीं, बट आई एम ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज. मतलब आई एम फ्लेक्सिबल. मतलब मैं सीख सकती हूँ. आई हैव कैपेबिलिटी है मेरे में, मुझ में कि सीख पाए. Shraddha, we should be ready to learn things which are required, but we don't have the required skill set. Yeah, but ready to learn. I am a, देखो और एक सेंटेंस है जो आप लोग ये सिचुएशन में यूज कर सकते हो. आई एम अ फास्ट लर्नर. मैं जल्दी सीखती हूँ. तो मैं मतलब मुझे वो एटीट्यूड है सीखने के लिए, न्यू थिंग्स सीखने के लिए. ओके, बिकॉज एक्चुअली आई वांट यू गाइज टू इंटरव्यू मी, बट अभी आई डोंट थिंक वील हैव द टाइम, बट लेट्स सी वेदर आई कैन डू दैट. ओके, थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए, सो दैट यू कैन आस्क मी. लो, आई विल बिकम द कैंडिडेट एंड आप लोग कुछ सवाल चैट बॉक्स में डाल सकती है, सो दैट आई विल गिव यू द आंसर्स. राइट, वी कैन डू दैट. फाइन, let's see if we have the time. Generally because we had a little confusion in between, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं, तो मैं appropriate टाइम पर लेती हूँ. मैं वो 1 घंटा, मतलब टाइम मैनेजमेंट should be proper. Okay, interview skills again here. Be polite. Don't speak first. Let them ask you the question. Can we also give into about our short-term goal and long-term goal? Yeah. Why not? Why not, Neha? Why not? Why not? See, which you think खुद के लिए क्या appropriate. देखो हर इंडिविजुअल अलग है. हमारा वे ऑफ द व्यू ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स अलग है. सीइंग लाइफ डिफरेंट है. तो यू कैन टॉक अबाउट दोस एस्पेक्ट्स, राइट? यू कैन. बिकॉज क्यों ये लोग क्यों ये क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? बिकॉज उनको ये देखना है कि ये जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्रोप्रिएट है या नहीं, वेदर यू आर सूटेबल फॉर द पोस्ट. यही चेक करता है वो फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट? ओके, नाउ बी पोलाइट. लिसन फर्स्ट. Listen carefully to every question. The questions the interviewer asks may be different from what you expected. देखो ऐसा कभी कभी होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि you don't know the answer, फ्लस्टर्ड हो जाते हैं क्योंकि मैंने प्रिपेयर करके क्या, ओके 1 2 3 ये सब सवाल, these are the questions, ये सब सवाल पूछने वाले हैं, बट दे आस्क यू समथिंग एल्स और उसका आंसर थोड़ा सा मालूम नहीं है मुझे, ऐसा कुछ है. तो व्हाट विल यू डू? Because you did not comprehend, this is a different situation, comprehend the actual question can signal to the interviewer that you do not listen and or have the inability to follow the directions. If you do not understand the question, it is always better to ask for further clarification than answering a question. देखो क्वेश्चन पूछा, समझ में नहीं आया कि क्या पूछा, क्या करोगे? They are asking about chalk and you are talking about cheese. ऐसा नहीं होना चाहिए. कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए ना. चौक के बारे में पूछा एंड चीज के बारे में बता रहे हो, सो ऐसा मत करो. यू कैन आस्क अगेन कि सर आई डिड नॉट कैच इट, और एक्सक्यूज मी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, ऐसा पूछ सकते हो. यू कैन डू दैट. और some question पूछा, you don't know the answer, you can always give the answer in a positive way that I don't know, but I am always ready to learn. I will find out. You have hundreds of things, ways of making it into a positive one. All right. Then do not be afraid to ask for a minute to collect. Yes, sometimes we get so flustered. जैसे आप लोग बता रहे थे, you are scared, so you don't know. तो आप लोग क्या, हम लोग रुक पॉज लेना चाहिए कि नहीं? What is your opinion? नहीं तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट सब सो गए. बताओ कि क्वेश्चन पूछा तो मुझे थोड़ा सोचना है उसके बारे में, तो एक पॉज लूं कि नहीं लूं? पॉज लूं मैं? गलत है पॉज लेना सोचने के लिए 1 मिनट? What do you say, guys? All my students are sleeping, I think. Yeah. Sorry, may you please repeat or come again? Yes. Nachiket has given me the earlier question. Yes. May you repeat it, right? Fine. So, pause ले सकते हैं क्या हम लोग? थोड़ा सा गैप आएगा. This
speaking to the YouTube one. इसलिए थोड़ा सा I'm getting it little slow, you know. Eye contact, Vishal has written eye contact, fine. We can take a pause. नाचिकेत, good, good, good. हम लोग एक पॉज ले सकते हैं क्योंकि कलेक्ट करने के लिए ऐसा मत सोचो कि पॉज है तो खराब है. लॉन्ग पॉज नहीं लेना चाहिए, बट एक छोटा सा पॉज ले सकते हो एंड थिंक, यू नो, पॉज लेके सोचो एंड देन गिव द आंसर विद कॉन्फिडेंस. सो दिस इज हाउ यू शुड बी doing. आप लोग को समझ में. Fidgeting, yes, one more thing is there. Sit in the, yes, this is the most important thing. Body language, we have not covered the body language part of it. Body language, 67% of interviewers say that poor eye contact is the most common non-verbal mistake, which I've already said. Eye contact बहुत important है. आप लोग सब interviewers बोलते हैं कि yes, yes, Divya, that is right, absolutely. So you are following, I think. Can take pause, but not very long. Shubham, very good, very good. So eye contact is extremely important. हम लोग eye contact रखना ही चाहिए. एंड इंटरव्यूअर्स जनरली बोलता है कि इधर इधर फ्लस्टर्ड होके देखना, इंटरव्यूअर को छोड़ के बाकी सब जगह देखना. और दूसरा भी एक आदत है पेन के साथ खेलना. यू विल कीप ऑन डूइंग दैट. नर्वसनेस दिखना, नर्वस बनो बट दिखाओ मत कम से कम. एटलीस्ट डोंट शो इट, राइट. ट्राई टू कंटेन एंड हैव अ प्लेजेंट एक्सप्रेशन. थिंक, टेक योर टाइम ले लो सोचने के लिए. और डोंट प्ले वो फिजेट कर रहा. फिजेट मतलब मालूम है, ये वो टच करना, ये टच करना. डोंट डू दैट. या पेन के साथ खेलना या कॉइन के साथ, नहीं, वो सब चीज नहीं करना चाहिए. ओके, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. 33% interviewers know within the first 90 seconds of an interview whether they will hire someone. कितना tragedy है सोचो. 33% interviews को तो समझ में आते हैं. First 90 seconds में ही पता चल, minutes नहीं, हाँ, seconds में पता चलता है इसको लेना है या नहीं. मतलब how important it is. That is, first impression is the best impression. So you have to be good. कैसे, how will you enter, how do you sit, and how do you introduce yourself. देखो ये तीन चीज में इवैल्यूएशन हो गया, ऑलरेडी हो चुके हैं इवैल्यूएशन. आई टोल्ड यू एंटर करते हुए इवैल्यूएशन हो जाता है. ऑल राइट, देन keep eye contact so you look honest, but it should not be a stare. ऐसा नहीं है कि you are stare कर रहे हो वो आदमी को, डरा मत जो इंटरव्यू लेता है, because then you look aggressive. मतलब ना fiercely क्वेश्चन पूछने के पहले ही आंसर ऐसा देना, अग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए. डू नॉट नॉट, वो लोग कुछ बोलते टाइम पूरा टाइम नॉट करो, कम, मतलब ज्यादा नहीं कि पूरा टाइम नॉट, मतलब मालूम है हाँ हाँ बोलना, तो कम करो, करना चाहिए बट नॉट टू मच. यू वांट टू शो अग्रीमेंट. रिपीटिंग द क्वेश्चन इज गुड और नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं. रिपीटिंग क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन रिपीट, मतलब प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. पूछने में कोई गलती नहीं. अगर नहीं सुना तो पूछ सकते हो. स्टूडेंट हैज आस्क्ड, इसलिए आंसर दिया मैंने. Yes, you want to show agreement, but posture and gesture, Bhimrao. Yes, yes. Okay. Then, how do you sit? Next point is sitting in the chair. Sitting in the chair, it is like difference. English में बोलते हैं sit in the chair and on the chair. On the chair मतलब देखो chair जो है उसका edge में बैठ के आप ही गिर जाएंगे. मैं मतलब nervousness की वजह से ऐसा कि I'll fall down, ऐसा मत बैठो. You should always sit in the chair. मतलब पीछे की साइड तक देखो. प्रॉपरली यू शुड सिट. क्लासरूम में तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि कैसे बैठना चाहिए. बैक स्ट्रेट और चेयर में. सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन. यू शुड सिट इन द चेयर, नॉट ऑन द चेयर. हिंदी मराठी में जो भी लिया आप लोग को भी सेंटेंस सीखना पड़ेगा. सिटिंग इन द चेयर सही है. ऑन द चेयर मतलब ऊपर जस्ट बैठा है, वो गलत है. सो विच इज द राइट वन गाइस? इन द चेयर सही है क्या ऑन द चेयर? आंसर दो मुझे. इन द चेयर या ऑन द चेयर, विच इज आंसर दो. आई होप मेरे बच्चे लोग सो नहीं रहे रियली, सिंस आई कांट सी यू. मुझे लगता है कि सो रहे. आर यू स्लीपिंग गाइस? या अलर्ट है? बिकॉज यू हैड मेनी लेक्चर्स. आई थिंक बच्चे लोग नींद के नजदीक होंगे शायद अभी, राइट? फ्रेश हो जाओ सब लोग. ओके, रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहे, बट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स टू कम. All right. So, meanwhile, आप लोग comments लिखते टाइम in the chair. Praveen, thank you. Sagar, very good, very good. मेरे बच्चे लोग सब अच्छे हैं, all attentive है. Manisha, yeah, I can see all the names. Chair, okay. Neha, very good. All of you, Pooja, all of you are giving me the responses, right? Good. So, let me go to the next one. Fine. Yes.
All right. So interview skills again. We go to the language part. अभी language कैसा होना चाहिए? Shraddha, lecture is going good. Okay, Shraddha. Thank you, thank you, thank you. We are attentive in the chair. Fabulous, excellent. Nachiket, a clap for you. Fabulous. Nachiket, thank you. All right. You have used it. मैंने जो सिखाया, practice करके दिखाया मुझे. Thank you, Nachiket. All right. सो इंटरव्यू स्किल्स में लैंग्वेज देखो, आप लोग ऐसा मत सोचो कि अभी जैसा मैं हिंदी बोल रही हूँ वो हॉरिबल है. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज. जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप लोग इंटरव्यू में, हिंदी का स्टूडेंट्स हो हिंदी यूज करेंगे, या मराठी का स्टूडेंट्स मराठी यूज करेंगे, संस्कृत लाइक दैट. तो वो लैंग्वेज के ऊपर गुड कमांड जरूरी है. यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज. क्लैरिटी के साथ बोलो, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, टोन पोलाइट होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए. और इंग्लिश का, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रही हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स को फेमिलियर है. फ एंड फ का मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताती हूँ. माय फादर इज अ फार्मर बोलना बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं बोल सकते आप लोग. माय फादर इज अ फार्मर. फ का डिफरेंस आना चाहिए, राइट. फैन और फैन का डिफरेंस समझ में आना चाहिए. फैन, फ और फ का डिफरेंस समझ में आना चाहिए. सेकंड है ज का, राइट. जीरो और जीरो का डिफरेंस आना चाहिए. जीरो नहीं बोल सकते जीरो को, राइट. देन फार्मर, जीरो. फिल एंड फील. आई फिल द कप बट आई फील बैड. आई डोंट फील द कप. देखो मीनिंग कितना बदल जाता है. सो फिल एंड फील, ई और ई का डिफरेंस, ये सब बेसिक्स. आई एम रशिंग क्योंकि टाइम अप हो रहा है, आई एम रशिंग अ लिटिल. Attire. We have discussed it a little earlier. मैम वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है. कसूरी, यस वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है. वही तो फ्लेक्सिबल ना, लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है, मतलब वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है. यू राइट, एब्सोल्युटली. अटायर फॉर्मल होना चाहिए. मेन के लिए नॉर्मली देखो, हमारे यू मस्ट हैव सीन व्हाइट कलर शर्ट, या व्हाट शुड बी आवर फिजिकल अपीयरेंस, वी लाइक आवर हेयर एंड बियर्ड नीटली ट्रिम्ड. एटलीस्ट अगर बियर्ड रखना ही है तो नीटली ट्रिम्ड रखो, नीटली ट्रिम्ड. ऐसा नहीं कि अनरूली होता तो नॉर्मली पीपल डोंट प्रेफर. यह अपना करियर के ऊपर है, जॉब के ऊपर है. कौन सा जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो? आर्टिस्ट, आर्ट रिलेटेड है तो लाइक प्रोबेबली क्रिएटिविटी रिलेटेड है तो दे विल नॉट माइंड. बट नॉर्मली डेस्क जॉब या ऐसा जो बोलते हैं हम लोग कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, ऑल दोस दे मे नॉट लाइक इट. कम से कम ट्रिम करो, नीट करो, ताकि यू हैव अ क्लीन लुक, अनटाइडी लुक नहीं. ओके. बट अल्टीमेटली वो पोस्ट के ऊपर है. पोस्ट के ऊपर एवरीथिंग. ऑलराइट. सो फॉर्मल, दैट इज एग्जैक्टली मैं वही बताने वाली हूँ आप लोगों को. मेन है तो लाइट कलर शर्ट या व्हाइट शर्ट, या पैंट्स है तो देखो ग्रे कलर या ब्लू कलर पहन सकते हो. एंड देन सूट डिपेंड्स. टाई और सूट भी कोई कोई पहनते हैं, मतलब डिपेंड्स कि कौन सा जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. बट जीन्स जनरली आजकल वो भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है. जीन्स में भी बहुत टाइप्स आने शुरू हो गया ना, ऑलमोस्ट लाइक पैंट्स जैसा भी आना शुरू हो गया है. बट प्रेफरेबली पैंट्स पहनो, फॉर्मल लुक आता है. एंड दैट शू है ना पॉलिश वाला, तो अच्छा दिखता है मेन के लिए. विमेन के लिए लेट अस सी कॉटन, क्रिस्प कॉटन अच्छा दिखता है. या सूट पहनो आप लोग, सिल्क साड़ी पहनो. सिल्क साड़ी मतलब प्रिंटेड साड़ी, वो भी एक्सेप्टेड है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, नहीं तो इंडियन ट्रेडिशनल वेयर. बट ज्वेलरी बहुत कम एंड मिनिमल मेकअप. तो इसमें भी आई एम टेलिंग यू, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट. पोस्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. यू हैव क्वेश्चंस, अभी से थोड़ा सा पूछो, बिकॉज वी माइट नॉट गेट मच टाइम आफ्टरवर्ड्स. आई फील द वे वी आर, बिकॉज वी गॉट अ बिट लेट. तो आप लोग को कुछ पूछना तो यू कैन आस्क इन बिटवीन. फाइन गाइस? यस, you can ask, but I'll carry on. Types of interviews, telephone interviews होता है आजकल, Skype interviews होता है, Zoom, face to face is a जो normal interview है, हम लोग जो familiar है. Panel interview होता है, फिर group interview, group में होता है, formal, informal. आजकल बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होता है, स्पेशली आफ्टर कोरोना के बाद थोड़ा ज्यादा हुआ है. आई फील पहले भी था, बट नाउ इट इज मच मोर, आई थिंक, कंपेयर टू द कंडीशन. पहले का कंडीशन देखते तो अभी थोड़ा ज्यादा है, लाइक इट इज मच मोर. गाइस, वी आर ऑलमोस्ट, टाइम इज अप. लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट. यस, सम क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए. लेट मी सी वेदर यू विल. मैम प्लीज रिपीट हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस इन इंटरव्यू. वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, नर्वसनेस के लिए. सी
बाहर बैठते टाइम है ना, थोड़ा सा ब्रीथ करो, टेक डीप ब्रेथ्स, काम योर माइंड। मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, बट सबको तो मैं बता नहीं सकता मेडिटेट करने के लिए, बट एटलीस्ट कामली बैठो बाहर 2 मिनट है ना, आंख बंद करके कलेक्ट योर थॉट्स, कूल योर माइंड एंड देन गो। व्हाट इफ गर्ल वेयर्स अ ब्लेजर? कस्तूरी, आई टोल्ड यू, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर है। व्हाट सॉर्ट ऑफ पोस्ट? ब्लेजर हर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सी फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट और एक टीचर का पोस्ट में बहुत फर्क है, राइट? Right from your hands to, I needn't go into the details. Like, you have to be very conscious. If you are a receptionist, बहुत conscious होना पड़ता है. Okay. In most of the interviews at the end, they usually ask, why should we select you? What should we answer, or what is expected? Yes, Nachiket, good one. तो you should be equipped. Why मैंने apply किया है? Because I am sincere towards this job, and how am I different? मैंने वो touch किया है वो issue को भी, कि मैं कैसे different हूँ उससे, बाकी लोगों से, क्यों मुझे देना चाहिए? क्योंकि I have some skill additional या सूटेबल, क्योंकि होमवर्क अच्छी तरह करना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छी तरह होमवर्क करो, और पोस्ट किसके लिए है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो, आप लोग का ये रिक्वायरमेंट के लिए मैं सूटेबल, वो आना चाहिए इनडायरेक्टली बोलते टाइम, इट हैज टू कम, लाइक सी आई एम सूटेबल, दे शुड अंडरस्टैंड। आप लोग का बोलने के ढंग से वो समझ में आना चाहिए कि सूटेबल है, बिकॉज हमारे रिक्वायरमेंट्स ये है और उसके पास ये सब है, राइट? अगर नहीं है तो उसमें वो पॉजिटिव अप्रोच है, ये एक्सेप्ट करने के लिए, और नए चीज सीखने का पेशेंस है। So this they should understand from you. Okay, guys, let me just quickly read. If I asked about any gaps in your work, if asked about any gaps in your work history, you should respond by, देखो गैप के बारे में पूछा, वर्क हिस्ट्री, नौकरी के बीच में गैप है, उसके बारे में पूछा, तो क्या दोगे आंसर? एक्सप्लेनिंग द क्राइसिस दैट लेड टू द गैप, क्राइसिस के क्यों ऐसा हुआ उसके बारे में बताओगे क्या? आप लोग बताओगे कि क्यों हुआ करके, और डिस्क्राइबिंग सम वॉलंटियरिंग एंड कंसल्टिंग यू हैव डन ड्यूरिंग दैट टाइम, तो डिस्क्राइब करोगे क्या वॉलंटियर इसके बारे में, या स्टेट दैट फैमिली, मतलब फैमिली मेरा टॉप प्रायोरिटी है, ये बताओगे क्या? या से दैट यू वर्क बेटर व्हेन यू हैव टाइम ऑफ इन बिटवीन जॉब्स, क्या बताओगे? Second, third, for explaining the crisis, describing some volunteering and consulting you have done during the period. उस टाइम कुछ volunteering किया, कुछ काम किया है, उसके बारे में बोलोगे, या फैमिली मेरा प्रायोरिटी है, ये बोलोगे? ABCD कौन सा आंसर है गाइस? तो 1 करके आंसर दो, ताकि मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकती हूँ तब तक। फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ABCD आंसर दे दो मुझे, 1 और A, ऑप्शन बी। पूर्वा, एक्सलेंट एक्सलेंट। Describing some volunteering and consulting you have done during that time. उस टाइम मैंने, मतलब गैप है मेरे करियर में, मतलब जॉब के बीच में गैप है, मगर उस टाइम मैंने कुछ किया है। बी, वेरी गुड अलीना। सो मैंने कुछ किया है, मैंने क्या किया? पूजा, गुड गुड गुड। मैंने क्या किया? You have to explain that. Then it looks good. So second question, when answering, yes, good Harshada. When answering interview questions, it is important to be interview questions answer करते टाइम क्या important है? Specific होना important है, be specific, या generally बोलना अच्छा है, या फैक्ट को थोड़ा खींचो ताकि अच्छा दिखे, state the facts to look good, या फोर्थ वाला, seize control of the interview whenever possible. उसको कंट्रोल करो whenever it is possible, इंटरव्यू को। तो क्या करोगे इसमें? कौन सा अच्छा है? बी, 2 का, ABCD कौन सा है आंसर सेकंड क्वेश्चन का? व्हेन आंसरिंग इंटरव्यू, बी ब्रीफ होना चाहिए क्या? बी जनरल होना चाहिए क्या? बी स्पेसिफिक? ऋषिकेश, एक्सीलेंट, यू गिव मी द आंसर फर्स्ट, गुड। नचिकेत, फाइन, very good Garima, very good, very good. I'm happy my students are so attentive. Thank you guys, thank you. Okay, then third question, let us see. अभी third question देखते हैं। अभी आप लोग को 1 ही मिनट है actually speaking, but let us take 2 or 3 minutes more. In every answer you give, the employer is looking for, हर जवाब जो देते हो, तो employer किसके लिए आउटलुक मतलब देखते हैं आप लोगों में? How you will save them time save कैसा करोगे? How you will save them money? How you will solve their problem? कौन सा है? Any of the above. क्या है होगा इसका आंसर? In every answer you give, employer क्या देखते हैं आप लोग? अब में सी है क्या? नचिकेत, थोड़ा ज्यादा सोचो।
how you will save them time, how you will save them money. Macha, money बोल रहे हो क्या? How you will solve their problems or any of the above. Guys, थोड़ा और answers दो मुझे. चलो, come on. हाँ, सब लोग आंसर्स दे रहे, सभी आंसर्स सही है, मगर ए बी सी सब मुझे दे रहे हो आप लोग. सब सही है, but what is the answer? Have you already given you the answer? What is the answer? See, Kasuri, right? Okay. Siley, D, really? Okay, good. D, oh, Siley, yes, Siley. Maybe all. Yes, Siley, you gave me the answer. Shushika also, yes, maybe all. Yes. Hina, 3D, yes. Oh, any of all are applicable. All your answers are right. क्योंकि सभी applicable है, right? So all the possibilities are there. Guys, last part के लिए probably अपने पास time नहीं है. So thank you guys for patiently listening to me. But if you have questions, 2 मिनट के लिए, because normally मैं एक छोटा सा सेशन रखती हूँ उसमें 10 मिनट्स के लिए, मतलब I will take up the post. मैं आज एक स्कूल टीचर का पोस्ट के लिए सोच के रखा था, मतलब आप लोग मुझे इंटरव्यू करोगे, बट उतना टाइम नहीं है. बट स्टिल आप लोग को कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हो. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ फैबुलस ऑडियंस. ऑलराइट. Oh, Garima, thank you guys. Thank you, Hina. Questions ऐसे पूछ सकते हो आप लोग. You want to ask me any question? Some of the boys ज्यादा पूछ रहे थे शायद questions, right? आप लोग पूछ सकते हो, कुछ question चाहिए तो पूछ सकते हो. Thank you, Vaishnavi. Sakshi, thank you. Pranita, Bhagyashree, thank you. Hey, so otherwise, Kasturi session, we are very great, very helpful session. Great. Oh, thank you so much for your response. Jyoti, thank you. Interview, where do you see yourself in the next 5 years, Garima? Yes, this is the question they ask. Generally, ये question पूछते. So you have to really put yourself in a high pedestal and speak. We get distracted by other interviews. How they going to give answers will come. So how we make ourselves calm. No, we should not get distracted. ये एक technique वो लोग हमेशा use करते हैं, but you needn't fall for it. You needn't fall for that. Thank you for this wonderful. It was an interactive and helpful session. I left out a few questions. I think I enjoyed it. Thank you, Shraddha. Thank you very much. I think, do we call it a day and stop there, or you have interactive and helpful session? Thank you, Shraddha. I too enjoyed the session because you were so interactive. Jayashri, thank you. I'm getting all these comments. I'm really grateful for those comments there. Aarti, thank you. If any question, one more, probably the earlier questions, I cannot see that in the chat box, so you can ask if you want. Darshan, thank you, Darshan. I didn't see you asking questions, Darshan. First entry, I think, right? Okay, so we call it a day and we stopped it here. Thank you once again for being such good students and responding, because I love interactive sessions. Oh, Rishikesh, thank you a lot for responding. Too many. Roshni. So, okay, session. Roshni, thank you. Too many compliments for such a nice and interactive. Nachiket, yes, you responded a lot. Thank you very much. All right, I hope I have done some justice to this, interesting session. Thank you, Nachiket. So we call it a day, and thank you once more. Nikita, Mani, yes. Thank you. So we stop it here. Harshada, yes. Thank you too. Pushpa, yes. Thank you.